Hello. In this video, I am going to discuss one of the famous works on ethics by Aristotle, and that is Nicomachean Ethics. Nicomachean Ethics considered as Aristotle's best work on ethics, which consists of 10 books based on the notes from his lectures at the Lyceum, or we can say Lyceum. Lyceum is considered as a sort of a school, or you can say philosophical or scientific school that was established by Aristotle for the purpose of teaching, writing, and we can say conducting research about the subject matter that Aristotle was interested in and his later students as well. So, according to Aristotle, ethics must be practical, not theoretical. He says that ethics is practical, not theoretical. ओके वाई निकोमेकियन एथिक्स, इसे निकोमेकियन एथिक्स ही क्यों कहते हैं, क्या कहानी है इसके पीछे, आइए वो जानते हैं। तो निकोमेकियन जो ये नाम है ये डिराइव हुआ है निकोमेकस से। निकोमेकस ऐसा माना जाता है या तो एरिस्टोटल के पिता का नाम था या फिर उनके बेटे का नाम था निकोमेकस। तो उनके मरने के बाद जो उनकी सारी ये राइटिंग्स थी और टीचिंग्स थी एथिक्स के ऊपर, उनको एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया और उसको उनके एथिक्स को निकोमेकियन एथिक्स नाम दिया गया उसके बेटे या फिर कह लो कि उसके बाप के ओनर के रूप में। तो इसलिए इसको हम निकोमेकियन एथिक्स के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। Nicomachean Ethics, which is composed around 350 BC, is a set of philosophical arguments, or you can say recommendations for the students who wish to achieve happiness. So, उनके लिए है ये Nicomachean Ethics. Now, Aristotle distinguishes pleasure from eudaimonia. He says that pleasure is kind of a feeling of happiness, while eudaimonia is having fulfilled with your potential, a state of psychological well-being and a flourishing state in which you are living well. So eudaimonia should be the highest aim or highest good for human beings. Aristotle says if there are several virtues, then highest of them, the most complete or perfect virtue among them will be the one which is the happiest of all, which gives us the most amount of happiness, you can say. An excellent human will be that which is good at living life. तो जो जीवन जीने में अच्छा है वो एक्सीलेंट ह्यूमन माना जाएगा एरिस्टोटल के अनुसार। दो एरिस्टोटल डज नॉट एक्सप्लिटली सेज व्हाट इज वर्च्यू, बट ही डिस्क्राइब्स द नेचर of virtue. Like he says, if a virtue exists, then it must contain a reason in it. So reasoning should be the basis of virtue, and happiness of a human depends on all these things. That what there should be a virtue, and which is based on reasoning, the self-sufficiency of that human, and he or she should be an active being at work. The which is called energia. So energia is described as by Aristotle a way of being in action. This is called energia. So happiness is also depend on this energia, that a human being should be active being at work. And Aristotle also says to be happy takes a complete lifetime. So it's a long journey. So on these lines, he says one swallow does not make a spring. Apart from it, Aristotle says the goodness of a thing is determined by the function, whether it fulfills its function or not. For example, the function of knife is to cut. If it is cutting, then it is functioning properly, then it is considered as good. Another example is of plant, that if it is growing and metabolize nutrients, then it is functioning properly and it is the goodness of it. So if it is not functioning the same, then it is not good. Similarly, he says that the function of man is to act rationally. If he is acting rationally, then he is at good. So the rationality describes the goodness of a man according to Aristotle. So that's why he says the goal of human life is to rationally pursue happiness over the course of life. Apart from this, what Aristotle says about virtue, that virtue is a disposition, मतलब virtue एक स्वभाव है, एक मिजाज है. It is a stable personality trait that reliably dispose a person to act well. तो ये उसका स्वभाव है, वर्च्यू का स्वभाव है, स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेट है किसी का भी, जो कि उसे
अच्छा काम करने के लिए मतलब अंदर से उसके निकलता है वो। इट डिस्पोज अ पर्सन टू एक्ट वेल। सिमिलरली वाइसेस भी क्या है, वो भी डिस्पोजिशन है, और ये भी उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट है किसी भी ह्यूमन के, जो उसके अंदर से निकलते हैं। एंड दैट रिलायबली डिस्पोज अ पर्सन टू एक्ट बैडली। तो वाइस क्या है, डिस्पोजिशन है वाइस भी, जैसे कि वर्चू है। तो वर्चू क्या है, वो उसे अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वाइसेस क्या है, बैड एक्ट्स के लिए उसे करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। So both are dispositions. Aristotle says that virtue cannot be taught in a classroom. It can be learned only through practice, constant practice, until it becomes habitual for a person. Now Aristotle says that there are two kinds of virtue. One is moral virtue and other one is intellectual virtue. So what is moral virtue? Let's see. Moral virtues are virtues which comes about as a result of habit. They are not arisen in us by nature. On the other hand, intellectual virtues are the one which comes about by instruction of others. एंड ये वर्चू जो हमें इंस्ट्रक्शन से मिल रहे हैं, ये हमारे नेचर में ही होते हैं। बस कुछ लोग हमें इंस्ट्रक्ट कर देते हैं उनके लिए। जैसे कि नेचर में कैसे होते हैं, जैसे कि फायर है, फायर की नेचर है वो अपवर्ड ही ब्लो होती है। उसकी नेचर जो है वो डाउनवर्ड नहीं वो हैबिचुएट हो सकती है। अगर हम उसे सिखाए कि भाई डाउनवर्ड, हम उसको कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से करेंगे, डाउनवर्ड वो हो जाए, उसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड ही रहेगी। तो सिमिलरली इसी तरीके से वर्चू भी होते हैं। सो एरिस्टोटल सेज दैट नाइदर बाय नेचर नॉर कंट्ररी टू नेचर डू द वर्च्यूज अराइज इन अस, rather we are adapted by nature to receive them and are made perfect by habit. So, a good person will always behave in a virtuous manner. A virtuous person with greater rationality is better able to control his or her impulses. He says that we are not just naturally morally good or bad, we have some control via learning or habituation over whether we live morally good or morally bad lives. So, he leaves a scope for learning and habituation also when he says about the virtues that are naturally there. Aristotle says that we are not naturally morally good or bad. We have some control in the form of learning and habituation over whether we live morally bad lives or morally good lives. So he says that no natural properties can be changed by habituation, but virtues can be changed by habituation. That means that virtue cannot be natural properties. तो यहाँ से डिड्यूस करते हैं कि भाई वर्च्यू नेचुरल प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैबिचुएशन से तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वर्च्यूज़ तो हो रहे हैं हैबिचुएशन से चेंज। तो इसका मतलब virtues cannot be the natural properties. Virtues are just the dispositions to behave in a correct way. They are not themselves activities, but they ensure that our activities will be of the right kind. So virtue is the mean between two extreme, that is excess and deficiency. So excess और deficiency के बीच का mean है virtue. अब एरिस्टोटल कहते हैं कि कुछ लोग मतलब वर्चुअस होते हैं, लेकिन कुछ लोगों से एक्सीडेंटली कुछ वर्चुअस काम हो जाता है। तो इस चीज़ को कैसे पहचानें कि कोई वर्चुअस है और सही में, और कोई बाई एक्सीडेंट कुछ वर्चुअस काम कर देता है, मतलब उससे एक्सीडेंट से मतलब गलती से हो गया कुछ वर्चुअस काम। तो वो कहते हैं कि जो वर्चुअस पीपल होते हैं, दे नो दे आर बिहेविंग इन द राइट वे एंड दे चूज़ टू बिहेव इन द राइट वे फॉर द सेक ऑफ बीइंग वर्चुअस। कि उन्हें पता होता है कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और वो फिर भी उसको चूज़ करते हैं कि उसमें काम को करने के लिए। लेकिन जो वर्चुअस नहीं होगा, उससे गलती से हो गया, उसे नहीं पता होगा, वो नहीं जानता होगा कि ये कुछ वर्चुअस काम है। सो देयर बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ वर्चुअस पीपल मैनिफेस्ट्स itself as a part of a fixed virtuous disposition. Actions having no virtuous mean are always wrong. Example: adultery, murder, etc. They are extreme uh, actions. They don't have any virtuous mean, therefore they are wrong. So based on this concept of his virtuous mean, Aristotle describe about three practical rules of conduct. First is avoid the extreme that is farther from mean, यानी कि extreme को avoid करो जो कि mean से दूर होता है, क्योंकि extreme. Second is notice what errors we are particularly susceptible to and avoid them diligently.
तो उन एरर्स को नोटिस करना है जो हम पर्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं करने के लिए, तो जिससे हम उनका अवॉइड कर सकें। थर्ड है कि बी वैरी ऑफ प्लेजर्स एज इट ऑफन impedes our judgment because it can alter or we can say influence our judgment. Now Aristotle also talks about moral excellence, that how is it is concerned with pleasure and pains, that sometimes what happen is on the account of pleasures we do bad things and on the account of pain we abstain from the noble ones, कि प्लेजर के चक्कर में कभी कभी हम कुछ बुरी चीज़ें कर देते हैं और पेन को अवॉइड करने के चक्कर में हम कभी कभी कुछ नोबल चीज़ें से भी दूर रह जाते हैं, उनको कर नहीं पाते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, तभी हम मोरल एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए एरिस्टोटल गुड एजुकेशन की भी बात करते हैं कि गुड एजुकेशन जो है ये हेल्पफुल हो सकती है मोरल एक्सीलेंस में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन निकोमेकियन एथिक्स। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।